Good morning, children. Children, it's our English class, and today I am going to start chapter 4.3 Nouns. In this chapter, children, we will know about cases of nouns. So, now let's start. Children, do you know what is a case? A case is the relationship of a noun with another word. What is a case? Children, case is the relationship of a noun with another word. Okay, and in this chapter we will know about three types of case. First is subjective case, second is objective case or accusative case, and the third one is possessive or genitive case. So now let's start. First of all, we will know about subjective or nominative case. What is a subjective case? When we use a noun as the subject of a verb. Remember these things. When we use a noun as the subject of a verb, okay, it is the nominative case. If you want to find out the subject, we have to ask the question who, okay, and what. V for the verb. Means when you ask question who, when you ask the question what, and when you ask these questions, then you get replies, okay, and the replied word are in subjective or nominative case. Okay, children. For example, Mary drew a picture. The word Mary is the subject and answer the question who drew the picture. When you ask who drew the picture, then you will find an answer. The answer is Mary. Okay, so Mary is in subjective case. Okay, now let's know about objective case. Okay, objective or accusative case, we call these two names. Okay, objective or accusative. When a noun is placed as the object of a verb, when a noun is placed or it is used as the object of a verb, it is in the objective or accusative case. Okay, in order to find out the object case, we have to put a question what or whom, and after this we get answer, and the answered word is objective case. Okay, for example, Vijay eats ice cream. Now we will ask question Vijay eats what? What does Vijay eat? Then we will get answer that Vijay eats ice cream. So ice cream is in objective case. Next example is the staff elected Mary as member of the vote. Then you ask the staff elected whom? Then you will find the answer is Mary. So Mary and ice cream are in objective case. Children, object is the person or thing affected by the action. Sometimes a sentence has two objects, as the teacher taught Reena a new lesson. In this sentence, the teacher taught Reena a new lesson. There are two objects, okay, new lesson and Reena. Both are objects. In such case, the noun referring to a person who is the person in the sentence, Reena, okay, is called the indirect object. Means the person that you are using in sentence, that is indirect object. And the noun naming a thing, new lesson, okay, naming a thing, what does a thing is this here? The thing is new lesson. So this is the direct object. If you are having two objects in the same sentence, then how you find out which one is object direct and which one indirect? Okay, then see that who is the person, then person will be indirect object and the things will be direct object. Okay, now let's know about possessive or genitive case. When a noun shows possession or ownership, it is in the possessive case or genitive case. Okay, it answer the question whose. इन हिंदी अगर हम इसको समझें तो पजेसिव केस क्या होता है? किसी का किसी चीज के ऊपर जब अधिकार होता है ना, पोजीशन होता है किसी के ऊपर,
जैसे मान लीजिए अगर हम क्वेश्चन करें किसका या फिर किसकी, देन जब हम आंसर जो प्राप्त होगा हमको वो क्या होगा, पजेसिव केस होगा. राम्स बैग इज मिसिंग. द फर्स्ट एग्जांपल इज राम्स बैग इज मिसिंग. हम क्वेश्चन करें हुज बैग इज मिसिंग, देन द आंसर विल बी राम्स. किसका बैग मिस हो रहा है यानी किसका बैग खो गया, तो राम का, देन राम्स बैग. ओके, सो राम्स इज इन पजेसिव केस. ओके, नेक्स्ट इज ही स्टेप्ड ऑन द स्नैक्स टेल. अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करें उसका पैर पर, ही स्टेप्ड ऑन द स्नैक्स टेल. उसका जो पैर था वो किस पे पड़ेगा, स्नैक्स टेल पे पड़ेगा, यानी कि सांप की पूंछ पे उसका पैर रखा गया है ना. तो हम यहाँ पे पूछें किसके टेल पर, किसके टेल पर यानी कि सांप के, यानी कि स्नेक्स टेल. हियर इज हियर इज अ पजेसिव केस. ओके, नाउ चिल्ड्रन, possession is shown by use apostrophe. What? Apostrophe. Use apostrophe s with singular noun. Examples are the king's the king's palace, and the next is Ravi's kite. These two examples are in possessive case. Okay, use just an apostrophe with plural nouns ending with s. Okay, example, soldiers uniforms. Okay, as tail, girls hostel. Children, remember these things that use just an apostrophe. Do not use apostrophe s if the plural nouns ending with s. in हिंदी अगर हम समझें इसको, जब कोई प्लूरल नाउन जिसका लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा हो, इसके लास्ट में क्या आ रहा हो, एस, तो अगर हमें उसके साथ एपोस्ट्रॉफी लगाना है तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस. ओके, फॉर एग्जाम्पल सोल्जर्स यूनिफॉर्म. अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, एस, सोल्जर्स. यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया गया, एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी एस यूज नहीं किया गया क्योंकि दिस इज अ रूल ऑफ ग्रामर दैट इफ just an apostrophe, we will use just an apostrophe if the plural nouns are ending with s. Okay, now next rule is for plurals that do not end with s, we use apostrophe s. अगर प्लूरल नाउन्स जिनका लास्ट में s नहीं है तो हम क्या करेंगे, उनके साथ एपोस्ट्रॉफी s का ही यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मेन, मेन्स. ओके, चिल्ड्रन, या चिल्ड्रन इज a plural noun, but we will use here apostrophe with s. Okay, we do not use apostrophe with non-living things. Non-living things के साथ, this is the most important rule of grammar, that we will not use an apostrophe with non-living things. Okay, next is apostrophe is used with abstract nouns which have been personified, described as living person. For example, कॉन्शियंस सेक, ड्यूटीज कॉल. ओके, अगर हम किसी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं तब यूज करते हैं जब क्या हो, विच हैव बीन पर्सोनिफाइड, डिस्क्राइब्ड एज लिविंग पर्सन. जब हम उसको किसकी तरह माने, किसकी तरह यूज करें, एक लिविंग पर्सन की तरह उसको यूज करें. ओके, जैसे कॉन्शियंस सेक, ड्यूटीज कॉल. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्यूटी और कॉन्शियंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मीन्स एक आइडिया है, एक विचार है जिनको किसी ने देखा नहीं है. ड्यूटी है, कॉन्शियंस है, तो उसके साथ में जब एपोस्ट्रॉफी यूज करना है तो क्या करेंगे, कब कर सकते हैं, जब ही कर सकते हैं जब उसको हम एक पर्सोनिफाइड या डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग पर्सन, जब उसको लिविंग पर्सन की तरह ही उसका डिस्क्राइब किया गया हो उसको, है ना. नेक्स्ट, एपोस्ट्रॉफी इज ऑल्सो यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट. फॉर एग्जाम्पल डेज, जर्नी, वीक्स, stay. Apostrophe is also used with nouns denoting time, जो टाइम को डिनोट करते हो, स्पेस को या फिर वेट को यूज कर डिनोट करते हो, उनके साथ भी हम apostrophe का यूज कर सकते हैं. डेज, जर्नी, वीक्स, स्टे. नाउ द चैप्टर इज ओवर. आई होप you are understanding very well, and I will send the answer sheet of this worksheet. Thank you, children.